Good afternoon, everybody. Today we are going to study a literary term called style. तो इन लिटरेचर स्टाइल किसको बोलते हैं? स्टाइल जो है, जो राइटर का अपना तरीका होता है लिखने का, उसे हम स्टाइल बोलते हैं. इन द वे इन विच अ राइटर चूजेस टू राइट. एंड यहाँ पे जो है लिटरेचर का अपना स्ट्रक्चर ये स्टाइल डिटरमाइन करता है. It distinguishes one author on another based on the tone and voice of their writing. एक राइटिंग का टोन या वॉइस कैसा होता है, इसके ऊपर से हम जो है राइटर में एक राइटर को दूसरे राइटर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड स्टाइल. तो स्टाइल जो है अपनी जो है राइटर की पर्सनालिटी, हाउ दे राइट एंड द टेक्निक्स दे यूज़, ये सारी चीज़ें जो है स्टाइल डिटरमाइन करता है. और स्टाइल के जो है चार एलिमेंट्स होते हैं. ओके, वॉइस, टोन, डिक्शन एंड पंक्चुएशन. These four elements decide what style of writing is used by the writer. ठीक है, पहले वॉइस के बारे में हम देखेंगे. वॉइस इज़ द पर्सनालिटी दैट कम्स थ्रू द राइटिंग बेस्ड ऑन द ऑथर्स बैकग्राउंड, पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस. सी, अगर कोई ऑथर जो है अपने आप जो है कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका है, उसके बारे में वो लिखेगा, तो उसकी वॉइस से हमको जो है एक एम्पैथी दिखेगी. अगर किसी और के बारे में लिख रहा है तो सिंपैथी दिखेगी. और अगर कोई चीज़ के बारे में राइटर को कोई आइडिया नहीं है, लिख रहा है, देन we won't be able to determine the voice of the writer. So a lot of things depends on the voice the writer uses while writing his work. Okay, another element is tone. A tone is the attitude the writer has towards the subject of the writing, which can affect the style. So if someone wanted to use a persuasive tone, or if someone wanted to use a strict tone through the writing, it is reflected in the very language they use in the material. So that determines the tone of the that particular subject, and on that basis we determine what style of writing the writer is using. Diction is the central to a writer's style, as word choice is key factor in how readers interpret the text. So word choice is diction is what words the writer is choosing to write. If he is oversimplifying, if he is simplifying, if he is using very relatable language, if he is using colloquial language. कोलोकियल मतलब जो रेगुलर में हम यूज़ करते हैं. अगर हम जो रेगुलर में यूज़ करते हैं लैंग्वेज, बहुत सारी बार हम राइटिंग में यूज़ नहीं करते. वी आर मोर कॉशियस व्हेन वी आर राइटिंग, बट सम राइटर्स दे लाइक टू एक्सपेरिमेंट एंड दे यूज़ डिफरेंट वर्ड देन what is necessary or what is expected. It creates a new style of writing. So diction is also a very important element in determining the style of a particular text or a particular author. Punctuation, the fourth element, the last element. So punctuation is something which does not which is different from the other three, because punctuation is actually a grammatical element. It determines the structure of a particular topic or particular text. So there is some wiggle room where writers can play around to make a statement or impact the way a reader understands a point. So punctuations are very important, especially in poetry, because it tells the readers where to break, where to stop, where to take a pause in a poem. And suppose a poem is writing about the stars, the moon, and the sea in the same line of the poem, in the same stanza of the poem, rather than punctuation can help him to give importance to one rather than all three. So this is how a writer manipulates the text. Punctuation is a manipulative element also, and also it determines the style.
So while using all the four elements, the types there can be four types of style that can emerge from a particular text. Sorry, five types of style that can emerge from a particular text. Expository writing explains or informs. This is a style which teaches the reader using facts and leaves out any personal opinion or personal bias. When the writer is not including his own personal opinion in a text, it is called expository writing. uh, Textbooks, your science and maths textbooks are classic example of expository writing, or the instruction manual that comes with electronic devices or things like that, it is also expository. News is also supposed to be expository a lot of times, but unfortunately it's not, है ना. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है, यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट है, एज द नेम सजेस्ट. यहाँ पे जो है फिगरेटिव लैंग्वेज जो है यूज़ की जाती है, विच शुड अपील टू द फाइव सेंसेस ऑफ द रीडर, एंड इट शुड सेट द सीन. द ग्रेट गैट्सबी जो है, ये जो है एफ स्कॉट फिजराल्ड की बुक है. इट इज़ अ फेमस क्लासिक नॉवल विच यूजेस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल. There is also persuasive writing, where the writer is trying to convince the readers of something, so he's using a very convincing language. This usually happens in political or religious speeches, or if ad campaigns जो होते हैं, marketing strategies में भी persuasive writing use होती है. Then there is narrative writing, and this is the style which is most used in most storytelling, most novels and most short stories, right? It includes the element of plot, character setting, conflict and emotion, and जो बहुत सारे जो है शॉर्ट स्टोरीज नॉवेल्स वगैरह जो है, स्क्रीन राइटिंग, जो मूवीज़ जो आप देखते हैं, ये भी नरेटिव स्टाइल में लिखे जाते हैं ओरिजिनली. एंड लास्टली, द लास्ट टाइप ऑफ writing style is creative writing, and you can write the definition of it. The other four जो अदर कैटेगरीज है, टाइप्स है, एक्सपोजिटरी राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, पर्स्यूसिव राइटिंग, नरेटिव राइटिंग, इसमें जो भी फिट नहीं आते वो क्रिएटिव राइटिंग में फिट आते हैं. और क्रिएटिव राइटिंग यूजुअली हैपन्स व्हेन अ राइटर इज ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर. So you can give an example of it. The second year students, I'm teaching a novel to second year students called Tomb of Sand by Gitanjali Sri, and she has created a very creative novel which does not fit in any other four categories. Tomb of Sand by Gitanjali Sri, you can write as example. She was nominated, shortlisted for Man Booker Prize, International Man Booker Prize in 2022 for her writing. Anyway, lastly we'll स्टडी द एग्जाम्पल राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर बाय एस टी कोलरिज जो है. कोलरिज ने इसमें नैरेटिव स्टाइल यूज़ किए हैं. यहाँ पे डायलॉग्स है, डिस्प्यूट है, एक्शंस है. देयर इज़ अ क्रोनोलॉजिकल इवेंट राइटिंग इन हिज पोएम. डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. एक एक सीन का जो है यहाँ पे विजुअलाइजेशन, फीलिंग्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकेशन, इट्स very stunning description of location is given by Oscar Wilde in Dorian Gray. So it is a descriptive writing style. Huckleberry Finn जो है, The Adventures of Huckleberry Finn is a novel by Mark Twain, and in that he has demonstrated narrative style uh, where the language used by the narrator is very colloquial, which represents a Southern American young Southern American boy. And lastly, the poem Raven by Edgar Allan Poe is also uses narrative elements like characterization, symbol, plot elements, and resolution that make it dramatic. So it is also it also uses the narrative style in writing. But when I read the poem, The Raven, I had never read another poem like it before. So I actually think it uses narrative style, but I also think it is an example of creative writing, because it's a very stunningly beautiful poem, and I had never seen or read a poem like that before. So there is somewhat of a creativity in it. So that's it for style, the literary term style, and I hope everything is clear to you in this short lecture. Thank you.